Well, first up on the bulletin, let's tell you about the clashes, unfortunately, which took place during Durga Immersion in Uttar Pradesh's Bahraich. Well, a 22-year-old man died and several others have been injured during the clashes between two groups in a village in Uttar Pradesh over playing of music during Durga idol immersion procession. Well, after the incident, tension gripped the area as people set several vehicles on fire, prompting the police to use force to bring the situation under control. Well, clashes have erupted when stones were being thrown and gunshots were fired at the procession as it was passing through Bahraich's Maharajganj Bazaar area. In fact, our colleague Vinod Mishra gets you more from the ground. Watch his report. बहराइच के हरदी इलाके में रविवार की शाम तकरीबन 6 बजे ठीक इसी जगह पर मूर्ति विसर्जन को लेकर बवाल हुआ, पथराव हुआ, आगजनी हुई, फायरिंग हुई, जिसमें एक शख्स की मौत हुई है। ये वो घर है जिस पर आरोप है कि इसी घर में राम गोपाल मिश्रा की हत्या हुई और यहाँ पर देखिए तस्वीरें किस तरह से उसके बाद जो भीड़ थी उन्होंने इस घर पर तोड़फोड़ की है। ये पूरा जो क्राइम सीन है इसको कवर किया गया है। कहा जा रहा है कि इसी घर में जो है खींच कर राम गोपाल मिश्रा को ले जाया गया, उनके ऊपर फायरिंग हुई। यहाँ पे एक ज्वेलरी शॉप थी, ये देखिए उनके जो तिजोरी है वो बाहर रखी है, तोड़फोड़ यहाँ पे हुई है। दूसरी तरफ आपको दिखाएं आगजनी की तस्वीरें हैं, कुछ चीजें जो है वो जलाई गई हैं यहाँ पर। और आपको दूसरी तरफ दिखाते हैं जो बोटल्स रखे हैं जिनके जरिए जो मूर्ति विसर्जन करने के लिए लोग जा रहे थे उन पर जो हमले हुए वो पत्थर से हुए और इस तरह की जो कांच की बोतलें हैं कैरेट्स में रखी हुई थी। ये देखिए छतों पे कैसे कैरेट्स रखी हैं। कहा जा रहा है कि इन्हीं कैरेट्स में बोतलें रखी गई थी और इनसे ही फायर जो है उन पर हमला हुआ। तो क्या ये कोई प्री प्लान्ड था, पहले से प्लानिंग थी? देखिए यहाँ पे ये भगवा झंडे लगे हुए हैं और इस्लामिक झंडे हैं। कहा जा रहा है कि भगवा झंडों पर इस्लामिक झंडे लगाए गए, उसके बाद ही ये विवाद चूंकि हुआ। एक बार आपको पूरी तस्वीर दिखाने के लिए वापस लेके आते हैं। ये वो सड़क है, इसी रास्ते से जो है जो मूर्ति विसर्जन के लिए वैन थी, गाड़ी थी जिस पर मूर्ति रखी हुई थी वो जा रही थी। Well, in fact, Uttar Pradesh's Chief Minister Yogi Adityanath has also taken note of the incident. He said that the guilty will not be spared. In fact, in a post, he said that those who spoil the law and order situation in Bahraich will not be spared. In fact, UP's Deputy Chief Minister Brajesh Pathak has also said that the rioters will face strict action. Watch this. कानून से किसी को भी खिलवाड़ करने की इजाज़त नहीं है। जो भी दोषी होगा जांच चल रही है, कड़ी कार्रवाई होगी। स्थिति सामान्य है और दोषियों की पहचान की जा रही है। जो भी मतलब अगर अनुशासन का पालन करवाने में यदि पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों को भी लापरवाही पाई गई तो उन पर भी कड़ी कार्रवाई। हमारी प्रतिबद्धता है कि हम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे हर स्थिति में। In fact, after the clashes took place in Bahraich, Samajwadi Party has hit out at the Uttar Pradesh government, slammed the law and order in the state. In fact, the SP has further asked what the state administration has been doing so far. Watch this. नौजवान का इस घटना में जो है हत्या हुई है, जो लोग भी जिम्मेदार हैं, सख्त से सख्त कार्रवाई उनके ऊपर होनी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ शासन प्रशासन के जो लोग जो जिम्मेदार थे, जिनकी नाकामी है, उनको अकाउंटेबल बनाया जाए। दूसरा, किसी निर्दोष को, चाहे वो किसी भी तरफ का हो, किसी भी तरह से उसको परेशान करने का काम, फंसाने का काम उत्तर प्रदेश में ये होना नहीं चाहिए। मार्च कर रही है ताकि जो लोग अब तक सड़कों पर आ रहे थे, उत्पात मचा रहे थे, उनको वापस भेजा जाए, उनको सड़कों से हटाया जाए। और ये कोशिश है कि एक बार फिर से अमन, चैन, शांति जो है वो बहराइच में आए। क्योंकि हमने देखा किस तरीके से सुबह से लोग जो है वो उग्र हो रहे थे, कुछ प्रतिष्ठानों को आग के हवाले भी कर दिया और उसके बाद फोर्सेस को जो है मूवमेंट करना पड़ा सड़कों पर। इस वक्त जो है ये पूरा जो स्ट्रेच है करीब 4 से 5 किलोमीटर का एरिया है मेन रोड से महाराजगंज जो महसी इलाके का तहसील है, सदर तहसील है, वहां तक जो है फोर्स मार्च कर रही ताकि लोग सड़कों पर न आए। क्योंकि हमने देखा कि अलग अलग इलाकों से, खेतों से, खलिहानों से लोग जो है मेन सड़कों पर आकर हंगामा कर रहे थे, तो उनको वापस घरों में भेजने के लिए, शांत कराने के लिए कोशिश की जाती। इससे पहले प्रशासन ने कोशिश की कि उनसे बातचीत किया जाए, समझौता किया जाए। यहाँ पे ये तहसील था, यहीं पे बातचीत भी हो रही थी, लेकिन बात कुछ बनी नहीं। उसके बाद प्रशासन को
मूवमेंट करना पड़ा। अब जो है प्रशासन सड़कों पर उतरकर एक तरह से शांति व्यवस्था कायम करने की कोशिश कर रही है। तमाम जो लोग अब तक सड़कों पर थे उन्हें वापस उनके घरों को भेज दिया गया है। कोशिश ये है कि जल्द से जल्द जो बॉडी है रामगोपाल मिश्रा की उसको क्रिमिनेट किया जाए और इसी कोशिश में प्रशासन जो है लगा हुआ है ताकि इसके बाद शांति व्यवस्था बने रहे। तो जो तस्वीरें हमने देखी कुछ देर पहले तक जिसमें कुछ प्रतिष्ठानों को एक होंडा की एजेंसी थी उसको आग के हवाले कर दिया गया, एक अस्पताल कर दिया गया, एक गाड़ी को आग के हवाले कर दिया गया था। तो वैसी कंडीशन ना रहे उसको उस कंडीशन को से एक तरह सेफ इन्वॉल्वमेंट यहाँ का हो और शांति व्यवस्था कायम हो रहे उसी की कोशिश की जा रही है। इसीलिए जो है ये फोर्सेज जो है वो यहाँ पर मार्च भी कर रही हैं ताकि चीजों को बैलेंस किया जा सके। जो लोग अभी तक सड़कों पर थे अब वो सड़कों से हटाए गए हैं। पुलिस ने ये कामयाबी जरूर हासिल की है कि उससे पहले तक बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे मौजूद थे, लेकिन अब डिसबर्स किया गया है, उनको हटा दिया गया है और इसीलिए देखिए फोर्सेज जो है वो मार्च करिएगा। तस्वीरें आपको दिखाते हैं कैसे जो है तमाम अधिकारी जो थे वो खुद सड़कों पर उतरे और पुलिस फोर्स के साथ उन्होंने मार्च किया ताकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। Well, of course, these are the visuals which Vinod is getting for us live from Bahraich. That's the live feed which is coming in, which gives us a sense of the unease which is there in the situation after the clashes. Remember, yesterday the Chief Minister himself is believed to have intervened and he oversaw the security arrangements which had happened in Bahraich after one man was shot. In fact, Yogi Adityanath is said to have ensured that the idol immersion happened on time as well. He gave out the orders for that, but one person has been killed in firing during this unfortunate incident where there were clashes which happened at the time of immersion when there was Durga Mata procession which was being carried out in this specific part. So far what we do know on the probe side is that at least 30 people have been detained by the police after these clashes has happened. The Chief Minister is assured that the guilty are not going to be spared at all. But already you have politics which is happening over this. You have opposition leaders, especially from the Samajwadi Party, which have come out and said that shows the law and order situation, also saying that there is a template to this incitement. Samajwadi Party has said that this is a template which is being followed by the BJP and others, that this is a template to incite in minority dominated areas. Meanwhile, let's get you some more reactions which have been coming in, starting with Manish Shukla of the BJP. बहराइच में मां दुर्गा की प्रतिमा के विसर्जन के दौरान उपद्रवियों ने हमला करके एक श्रद्धालु की हत्या कर दी। इस पूरे प्रकरण में कई लोग घायल होने की भी सूचना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कड़ी कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। मुख्य आरोपी सलमान समेत कई अज्ञात लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए हैं। 25 लोगों को डिटेन करके पूछताछ जारी है। लापरवाही बरतने वाले महसी और हरदी थाने के थानाध्यक्ष निलंबित किए जा चुके हैं। अन्य पुलिस वालों पर भी कार्रवाई की गई है। Well, you can see on your screens the clashes which had happened, following which one person had been shot dead. Times Now is on the ground. We are getting you minute by minute details of what's happening so far in the probe report. What we do know so far is that there is an FIR which has been filed for over 1,000 people. In fact, this for shouting provocative slogans. The Samajwadi Party has also politicized it, saying that there is a template to this incitement which happens during these kind of Hindu processions, is what the Samajwadi Party has said as they question the Yogi Adityanath government. In fact, this FIR which now has been lodged is over 1,000 people have been named for allegedly shouting provocative slogans. In fact, this is a report by Vinod, who's getting us these live reports from the ground. Watch what's happening in Bahraich right now. में थे जिनकी मांग यही थी कि जिनके खिलाफ नेम्ड FIR हुआ है उनको अरेस्ट किया जाए। उनकी अरेस्टिंग नहीं हुई है। खासतौर पर हमीद जिसकी बात की जा रही है, जिसके घर में खींचकर रामगोपाल मिश्रा की हत्या का आरोप है, उसे अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया और गुस्सा उसी बात को लेकर था कि उसकी गिरफ्तारी कब तक होगी और इसी की मांग लगातार जो लोग हैं वो कर रहे थे। दिखाया आपको तस्वीरें किस तरह से पूरे एरिया को जो है एक तरह से कॉर्डन ऑफ कर दिया गया पुलिस के बैरिकेड करके, पुलिस की गाड़ियों के द्वारा। और जो फोर्सेज है वो अब चूंकि लोग अलग अलग खेतों से निकलकर सड़कों पे आ जा रहे थे,
भीड़ इकट्ठी हो रही थी सड़कों पे, तो उसको कंट्रोल करने के लिए ही कोशिश की गई कि जो अधिकारी हैं पहले बात करने की कोशिश की गई कि लोगों से बात किया जाए, उन्हें समझाया बुझाया जाए, लेकिन जब बात नहीं बनी तब जो है सड़कों पे उतरना पड़ा। और अब जो लोग हैं वो कम से कम जो है वो डिस्पर्स हो चुके हैं, यानी कि वो अब सड़कों से हट गए हैं। तो कोशिश यही थी, इसमें थोड़ी सी सफलता प्रशासन को जरूर मिली है, लेकिन जिस तरह के हालात अभी बने हुए थे उस पर अब हम कह सकते हैं कि थोड़ा नियंत्रण हो गया है। अब चीजें थोड़ी बेहतर दिशा में जा रही है। पहले हमने सुबह देखा था किस तरीके से लोग पहले सड़कों पर उतरकर हंगामा किया लोगों ने, उसके बाद घरों कई सारे प्रतिष्ठान थे उसको आग के हवाले कर दिया। लेकिन जब फोर्सेज उतरी, जब सीनियर अधिकारी Well, in fact, let me go across to Adib, who's joining us with more details on this. Those, of course, were the ground reports that we were getting for you from Bahraich. Adib, you must tell us what's happening the day after communal clashes, which we have seen in Bahraich, following the clash which happened during the procession of Durga Immersion, following which, unfortunately, one man was shot at. A 22-year-old has lost his life as well. Uneasy calm still persists, as you can see on the right-hand side of your screen. Massive security forces have been deployed as well to ensure that no untoward incident happened. Remember, yesterday the situation was also brought under control, and now what we do know right now is that there have been several people who have been detained in order to ensure that there is peace and tranquility in this place. At least 30 people have been detained so far by the police over clashes which have happened. In fact, Yogi Adityanath has already said that the guilty are not going to be spared at all. We are getting you minute-by-minute updates as to what's happening in Bahraich. What we do know so far is that other than the politics which is happening, let me in fact go across to Adib, who's joining us. Adib, can you tell us what's happening on the probe front? Yogi Adityanath has cracked the whip, said that no one is going to be spared. The guilty will be punished. Well, definitely, Meghna, as you mentioned, Chief Minister Yogi Adityanath is closely monitoring the situation. In fact, he has asked the senior officials of Uttar Pradesh to monitor the situation, and he has instructed that multiple forces should be deployed in Bahraich just to maintain law and order, and those involved in violence should not be they should not be left out, and strict action should be taken against the people who are involved in violence. In fact, several policemen, those were involved in the laxity, there was some laxity on the ground. Those policemen have been suspended, and now police have detained more than 20 people. They are questioning, and they are trying to bring the normalcy in the district. The first priority of the police is to maintain the law and order, because there are several fresh incidents of violence that has taken place in Bahraich itself. But now the police is focusing only on to maintain the law and order, and they are talking to both the communities, to the leaders of both the communities, the religious leaders, and they are trying to calm down the things in the district to bring law and order. Chief Minister Yogi Adityanath himself is monitoring the entire situation, Meghna. Developments on that front, Adib, of course, Bahraich has been on the ball in the past too. There was a similar tension, a communal tension which has been built up, following which there were FIRs which were filed. And now just yesterday, after a man was shot dead in the clashes which has happened, we'll wait for tough action, as the Chief Minister has already promised. Meanwhile, politics, of course, has already begun. Adib, we'll keep coming back to you for more updates. But on that note, we're going